आप खतरों के खिलाड़ी और मास्टर शेफ दोनों के फैंस हैं, तो यू आर इन फॉर अ बिग ट्रीट विद स्टार वर्सेस फूड सर्वाइवल, जो कि बहुत ही कमाल का ब्लेंड है बिटवीन एडवेंचर एंड कुकिंग, एंड दैट टू विद योर फेवरेट स्टार्स। और उन्हीं में से आज एक हमारे साथ हैं। ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज नकुल मेहता, जिनके काम को हम सबने पसंद किया है, सराहा है। ऑफ कोर्स नकुल से ढेर सारी बातें हम करेंगे, बट नकुल, सबसे पहले पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में अ वार्म वेलकम टू यू। Thank you, Nidhi. Thank you for that warm introduction. इट इज वेल डिजर्व्ड, एज आई सेड। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे ना एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आएगी जब ये इंटरव्यू वो देखेंगे कि अच्छा, हम आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस अमेजिंग जर्नी दैट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ। पहले तो फॉर द अनइनिशिएटेड, टेल मी मोर अबाउट दिस, व्हाट इज इट, स्टार वर्सेस फूड सर्वाइवल? आपने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आई थिंक जब मुझे पहली बार कॉल आया था डिस्कवरी से कि हम एक शो कर रहे हैं, इट विल हैव यू, इट विल हैव शेफ रणवीर ब्रार एंड यू विल कुक। आई सेड हाँ, कोई नहीं, बड़ा सिंपल सा साउंड कर रहा है। एंड दे सेड ये बंबई के स्टूडियो में नहीं करेंगे, हम पहाड़ों में जाएंगे, शायद 14-15 हजार अबव सी लेवल जाएंगे, और वहां पे अलग अलग चुनौतियां होंगी, उन्हें पार करके एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में आपको लोकल इंग्रेडिएंट सोर्स करके खाना बनाना है खुद। ऐसे अच्छा, ये मतलब सिर्फ कुकरी शो नहीं है। सो एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ, मैं बचपन से ना कार्टून्स के डाइट पे बड़ा नहीं हुआ हूं, मैं हमेशा से डिस्कवरी देखता था, जहां मुझे आई यूज्ड टू वॉच, एंजॉय वॉचिंग डिफरेंट, लाइक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड। अलग अलग जो आई थिंक डिस्कवरी में इतने इंटरेस्टिंग शोज आते हैं विच टेल यू सो मच अबाउट। क्या होता है बाकी सब चैनल्स पे, यू लर्न आइदर इट्स एंटरटेनमेंट, हियर दिस इज, आई फील इट्स मोर एड्यूटेनमेंट, राइट, इन दैट सेंस। सो मेरे लिए इट फेल्ट लाइक कि मेरे बचपन का सपना पूरा हो रहा है। एक तो मुझे पहाड़ों में जाने का मौका मिल रहा है, दूसरा मुझे डिस्कवरी में आने का मौका मिल रहा है, जो आज तक मतलब मैं जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स पे ही दिखाई दिया हूँ ज्यादातर लोगों को। एंड तीसरा था, मुझे कुकिंग करने का मौका मिल रहा है, वो भी मेरे दोस्त के साथ। रणवीर एंड आई नो ईच अदर फॉर 5-6-7 years नाउ। एंड फनी स्टोरी है कि हम एक्चुअली सेम रोड पे रहते हैं बम्बई में, पर हमारा बम्बई में मिलना कभी नहीं होता है। हमारा हमेशा मिलना कहीं इंटरेस्टिंग जगह पे होता है। तो इस बार कुछ 4-5 दिन ट्रैवल करने लगे, जाने और आने में, स्पीति, और वहां हमने ये शो बनाया है। आई थिंक जो मेरा एपिसोड है वो हमने स्पीति में शूट किया है, जहाँ काफी सारी चुनौतियां थी, पर उन सबको पार करके हमने कैसे लोकल इंग्रेडिएंट्स को लेके कुछ ना कुछ कुकिंग की। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ कुक। मैंने जो भी कुकिंग सीखी है ना, वो अपनी बीवी की बदौलत सीखी है कोविड में। थोड़ा बहुत पाव भाजी, अंडा भुर्जी, थाई करी, पास्ता इतना बना लेता हूँ। बट this was very special because we were up at 15,000 above sea feet level and we were cooking some exotic dishes, नहीं थी, तो बड़ा मजा आया इस शो में। नो बट टेल मी, जैसे आपको, आपने पहले सोचा कि एक नॉर्मल स्टूडियो बेस्ड कुकरी शो होगा, चलो चलो जाके करते हैं, बट जब आपने उस लोकेशन पे शूट किया, जैसे आपने कहा लोकल इंग्रेडिएंट्स ढूंढने हैं, ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी थे, सो वो कितना चैलेंजिंग रहा? एज अ स्टार नकुल ने कितने एफिशिएंटली सर्वाइव किया? मैं आपको अगर सच बताऊं, मैंने किसी से बात नहीं कही है, तो एज अ स्टार यू आर यूज्ड टू एन entourage, right, which honestly you don't even need, but it also provides employment to everyone, right? I shouldn't even be saying this, so why not? तो मेरे साथ मेरे हेयर स्टाइलिस्ट आए थे, मेरे साथ मेरे मेकअप दादा आए थे, मेरे साथ मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर आए थे, मेरे मैनेजर आए थे। मैं वहां पहुंचा, उसके बाद मैंने रियलाइज किया इन सब लोगों का कोई काम नहीं है, क्योंकि फॉर द नेक्स्ट 15 आवर्स ना मुझे राहत मिली शीशा देखने की, वहां की जो हवा थी और जो तापमान था, द टेम्परेचर, नो टच अप और नो हेयर वर्क कुड हैव हेल्प। एंड आई रियलाइज आई नीड टू सरेंडर माई सेल्फ टू नेचर एंड टू वॉट द शो entails and just have fun and be there. So the start, Nakul, which I am used to, like working with a battery of team, I realize I don't need any of that. You're in the mountains, it's you and chef. Now you have to figure your way out and cook something which can feed you. I think just that simplicity of that was so wonderful, because then you were left to your own devices कि अब मुझे यहाँ से वहाँ, जैसे एक नदी थी, उसे पार करनी है, we had to go in this, like sort of, it was this Zip bridge, line types. a zip line, but you have to pull yourself. It was an old school zip line, not even a zip line. I don't know what they call it. I forget the name. You have to pull yourself.
देखने में तो बड़ी सिंपल लग रही थी क्योंकि जिप लाइन तो हमने की है, पर दिस इज द लोकल वे राइट, उसमें काफी मुशक्कत लगती है। तो वो किया, उसके बाद फाइंड लोकल इंग्रेडिएंट्स, यू हैव टू ट्रैक अ लॉट एंड ऑल ऑफ दिस whilst I've had no time to acclimatize to 14,000 feet above sea level. You need a day and a half minimum. Me and Ranveer Right. both did not have it. So I feel the challenge of doing this on your own without the entourage or without support of people felt like, you know, the Nakul who was growing up wanting to do all things adventure, found a friend in Ranveer and then हमने बड़े मजे किए और मैं उनके साथ सीखा। मैं मजाक कर रहा था कि वो शेफ है, मैं सू शेफ हूँ, यू नो, असिस्टेंट शेफ। सो हालांकि मुझे ज्यादा ज्यादा पता नहीं है कुकिंग के बारे में, पर मैं आई थिंक आई वेंट अलोंग विद हिम एंड आई रियली एंजॉयड दिस राइड। Right. You know, but also about the show, ये भी ऐसे लोग कह रहे हैं, it's the opinion that it is less to do with the cooking and the challenges, but it is more about the camaraderie that, you know, your the guests are building with Ranveer, और उनके जो interests सामने आ रहे हैं, जैसे आपका, I think both of you have this common interest in poetry. तो किस तरह का banter या किस तरह की camaraderie देखने के लिए मिलेगी एपिसोड में? निधि, मैं और रणवीर एक दूसरे को कुछ सालों से जानते हैं, हम पहले भी मिल चुके हैं। कोविड के दौरान हम एक दूसरे को मैसेज करते थे, उन्होंने कोई कविता लिखी थी जो मैंने पढ़ी थी, फिर हमने एक साथ कुछ बनाया था जो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। सो देयर इज अ हिस्ट्री, बट आई थिंक आफ्टर सो लॉन्ग हमें एक मौका मिला, क्योंकि कोविड के बाद जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई थी दैट वी कुड लाइक व्हाइल्स वी लिव ऑन द सेम रोड वी हैव नॉट मेट ईच अदर इन अ कपल ऑफ इयर्स। इतनी सारी चीजें बातें के बारे में बातचीत हुई। पेरेंटहुड, आई हैव बिकम अ फादर सिंस द लास्ट टाइम आई मेट हिम, so I could like we could connect on a different level. He has a son, I have a son. You know, we spoke about, of course, poetry. He read out something which he had written. I read out something. कलाकार के ऊपर एक कविता लिखी थी हमने पैंडेमिक में, उसके बारे में वो दोनों डिस्कस हुई। आई थिंक जब भी हम मिलते हैं, you know, we speak about life, and I think while this show might be, you know, it might sound like Star versus sort of food. I think this show is about life. This show is about philosophy. This show is about आप जहां पर भी है उस जगह को अपनाना, उन लोगों को अपनाना और उनका बन जाना, instead of coming from Bombay as an actor or a celebrity chef and then trying to make a show. I think it was more about just being, and बड़ा मजा आया ये करके। आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत यू नो इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा होगा, जैसे आप बात कर रहे हैं उससे मैं समझ पा रही हूँ। बट जैसे एज इंडिविजुअल्स भी नकुल, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस हम लेते हैं, सो देयर इज सम टेक अवे, यू नो, जो हमारी लाइफ लॉन्ग हम साथ रखते हैं। रिगार्डिंग दिस एपिसोड फॉर दिस शो, आपका टेक अवे क्या रहा? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये वाला। यू नो, क्योंकि मुझे 2-2.5 दिन लगे पहुंचने में और 2-2.5 दिन लगे वापस आने में, there was a lot of time to actually just think about the 5 days, you know, and that especially that one day we spent. And I think one thing I really took away was, हम जब शहर में रहते हैं ना, और शायद आप ये बात समझेंगे नहीं, और अच्छी बात है आप नहीं समझेंगे, हम ना एक अपनी जिंदगी का एक कोकून बना लेते हैं। स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट हैं या एक एक्चुअली एक्टर हैं, टेलीविजन में काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी एक रूटीन बन जाती है। एक स्टूडियो में जाते हैं, 10-12 घंटे काम करते हैं, आते हैं, आपका शो रोज आता है, जहां भी जाते हैं लोग आपके बारे में बात करते हैं। आई फील जब मैं वहां गया और मैंने, you suddenly you were left without the devices and the crutches you've built around you, the walls you've built around yourself. You just feel so liberated, you just feel so empowered, and you just feel that, I feel the greatest thing I feel every time I go to the mountains is it makes you feel so small. You know, you're in this, like this world which is infinite, and aap ek chote se, you're a speck of dust, and that can empower you thinking that the possibilities are infinite, and that can also empower you by, you know, by telling you that you don't really matter in the larger scheme of things. And I think that understanding is key, क्योंकि बम्बई में रह कर and you know, कभी कभी आप भूल जाते हैं वो छोटी छोटी बात, रोजमर्रा की जिंदगी में आप भूल जाते हैं, and you stop, I think most importantly you stop taking yourself very seriously, which is what I really took back from, I think, this trip and this episode of Star vs Food. Right. I think it's a very beautiful experience जो आपने कहा है, and being from the hills, I can so much relate to it कि ये हम हर दिन महसूस करते हैं। But like, you know, having said that, आपने जैसे कहा कि
गैजेट्स के बगैर, डिवाइसेस के बगैर वो हाँ, 5-6 फोन भी नहीं दिन चल रहा था वहाँ फोन भी नहीं चल रहा था No, but it is thanks to these devices कि हम नकुल को जानते हैं, नकुल के काम को जानते हैं. So talking on the work front now, other than that, where else and how soon are your fans going to see you? So my episode of Star vs Food comes out this week. So सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ देखेंगे. उसके अलावा I just got off a show which ran for 2 years on television. एक चीज जो मैं हमेशा करता हूँ जब भी मैं टेलीविजन का मेरा एक स्टेंट खत्म होता है, आई टेक सम टाइम जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे कुछ भी नया देना है मेरे मेरे दर्शकों को, मुझे जिंदगी जीनी पड़ेगी. आई हैव टू लेट लाइफ कम इन, राइट, लेट लाइफ टच मी, लेट एक्सपीरियंसेस कम इन. सो ये वक्त है जहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे के साथ बिता रहा हूँ, ऑफकोर्स बीवी और पेरेंट्स के साथ, बट बिकॉज उसके जिंदगी के पहले 2 साल में आई वाज डूइंग अ फुल फ्लेज्ड टीवी शो व्हिच वाज जस्ट सो इंटेंस. I don't think I had that kind of time. So जैसे मैं कल ही गोवा जा रहा हूँ, उसके साथ अगले 10 दिन, just the idea is to wake up, take him to the beach, take him to the park, and just spend time building this bond. I feel which in so many ways, I feel जो चीजें हमें इन एक्सपीरियंसेस से मिलती है ना, आप उन्हें अगर अपने काम पर लेके जाए, जब भी जाए, I feel your work is deeper. So this is the time which is my time, right? So I am using the next 2-3 months to just be with myself and be with my family and just connect. And उसके बाद 2-3 चीजें चल रही हैं, कुछ मैं लिख भी रहा हूँ. तो अगले साल you'll see me very soon, I think. But for now, this is my time. Right, right. You know, it's always a pleasure when you come or any other actor as good as yours जो अपने काम को इतने seriously लेते हैं, उनको on screen देखना. But of course, you also deserve that me time of yours, वो आप करिएगा. But I want to know, नकुल, जब आप कोई project लेते हैं, so आपकी कोई priority होती है when you decide before saying yes or no? It's mostly intuitive. I have to feel that it is the right thing to do at that point of time. I The second thing is I have to really like the people I work with, क्योंकि अगर मैं अपनी जिंदगी का 1 साल इन लोगों के साथ बिता रहा हूँ, it should be an energy I like going to. That has become a very very important part. And तीसरा is I also look at I think now having spent about 11-12 years on television, I also look at how my character can have value and can have some impact, which is beyond just impact personally or how I could benefit. मतलब इससे दर्शक क्या ले जा सके, या मैं इस किरदार या इस शो के जरिए, because television is a mass medium, what can I leave for them, is something which always plays at the back of my mind. So I think, yeah, these 2-3 things kind of, when they come together, I feel it's the right thing to do. Right. You know, a lot of people, I think most of the people जो आपको जानते हैं, नकुल the actor को जानते हैं, जो आपको social media में follow नहीं करते, they do not know about Nakuul the trained dancer. Hey. Please throw some light on that aspect because it's a beautiful aspect. मैंने बहुत सारे आपके performances आपके social media में देखे हैं. Yeah, It leaves me stunned with your grace. Nidhi, I get so embarrassed because honestly, if you were to ask me, I don't think I'm good at all. And I used to be at one point when I used to train. So I've taken training in ballroom dancing and different forms of dancing. But I feel I used to have another kind of discipline and sort of grace then. I feel over the years, मेरा मेरा मन इतना नहीं है dancing में. मतलब I don't enjoy it as much as, like, I feel acting or performance comes far easier to me. Dance, I have to really struggle and work hard. So I feel very embarrassed and shy of dancing, but once in a while when I meet someone who I get inspired by, I feel like dancing. So like recently I danced with this young boy. His name is Nakuul Mehta. He does, he's very famous online. He does this dance which is called Men in Skirts. And I'd seen a video of his in New York, and I'd written to him saying, I love your grace, and I love the way you express. And then when he came to Bombay, he ended up teaching me something, and we danced, right? So yeah, I saw that. So I think it's more like if I enjoy a person, then I want to learn something from them. But other than that, जो थोड़ी इक्का दुक्का dances मैं करता हूँ, वो अपने shows पे करने पड़ते हैं तो कर लेता हूँ. But Nakuul, with this journey of yours, आपके debut से लेके आज, talking about this Discovery के show का आपका episode, looking back, so much has changed. As an audience ही अगर मैं देखूं तो हमारा
एंटरटेनमेंट को कंटेंट कंज्यूम करने के तरीका इतना बदल गया, वी जस्ट नॉट लिमिटेड टू द इडियट बॉक्स, सो टू से. एज एन एक्टर हु इज देयर इन द इंडस्ट्री, आप इस चेंज को कैसे परसीव करते हैं? You're right. When I had started off, I don't think any opportunities थी really, and especially if you're an outsider, it was, you're not from the film family or you're not connected. It seemed like an uphill battle. I feel it is far more democratized today because of social media. I feel you can be sitting anywhere. You could be in Nainital, and अगर आप poet हैं या storyteller हैं या TikToker हैं, आपके पास opportunity है. You don't have to be in Bombay and be connected necessarily to break through. And I think that's wonderful. That's beautiful because every person in the country has a shot. And art is so subjective, right? मतलब कौन कहता है कि अगर हम टेलीविजन पे आते हैं या फिल्में करते हैं तो ही आप आर्टिस्ट हैं या अच्छे एक्टर हैं. आप कहीं भी हो सकते हैं. आप थिएटर कर रहे हो सकते हैं शिमला में. Your work today can reach out. So that definitely is a huge shift. I think the other shift is कहानियां ज्यादा nuanced है और हर किस्म की कहानियां हैं. पहले या बॉलीवुड होता था या टेलीविजन होता था, बीच में कुछ था ही नहीं. Theaters really, like I think in Bombay, it's become huge. OTT, the digital world, has given access to so many storytellers and actors and Right. technicians. तो I think ज़्यादा opportunities है and ज़्यादा अलग-अलग किस्म की कहानियां हैं, जो हम सबके लिए अच्छा है. As an audience, as artists, it's a great time for all of us to really be. Right. Any dream project or dream role of yours that is yet to be fulfilled? Well, there are so many, yaar. I mean, fulfilled तो बहुत चीजें करनी है. Maybe I want to work with really, good filmmakers. I want to work on all kinds of stories. I want to make my own show. I want to make a travel show which is about life and philosophy and create my own genre there. मतलब बहुत चीजें करनी है यार. मतलब ये तो आपने बड़ा टची सवाल पूछ लिया है. ऐसा लगता है शुरुआत ही नहीं हुई है अभी तो. हजार ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. But since we've thrown it out on the universe, I'm a strong believer of manifestation. So I Yes. really hope कि जो भी आज हमने आपके लिए throw out किया in the universe, it comes back to you manyfold, because as an audience, अगर मैं बात करूँ, it is always a pleasure to watch artists like you to entertain us. So on that note, Nakuul, I wish you all the luck for everything that you do in future to entertain us and in your personal life for your me time. And thank you so much for your time for this interview. Thank you, Nidhi. It was such a pleasure to speak to you. And please give my warmest love and regards to your mother. I shall. Thank you so much.